Good morning, students. How are you all? Today we are going to teach the causes of season on the earth inside the earth. This is your last video class. The equator is an imaginary line that divides earth horizontally into two parts, the northern hemisphere and the southern hemisphere. पृथ्वी को दो भाग से विभाजित करने का एक काल्पनिक रेखा है इक्वेटर. नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर. इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध. पृथ्वी को दो भाग से विभाजित करने की एक काल्पनिक रेखा है, उसको हम कहलाती है इक्वेटर. द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध. We also know that Earth is tilted on axis. When it revolves around the sun, one half of the Earth or one hemisphere is tilted toward the sun, and the rays of the sun fall directly on it. पृथ्वी अपनी दूरी पर झुकी हुई है. जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो पृथ्वी का आधा या एक गोलार्ध सूर्य के झुका होता है और सूर्य किरणों सीधे उस पर पड़ती है. As a result, the hemisphere that tilts toward the sun gets more light as a summer season. इस झुका हुआ गोलार्ध में अधिक प्रकाश प्राप्त करता है. इस भाग में अधिक गर्मी का मौसम होती है. The hemisphere that gets less sunlight due to being tilted away from the sun has winter season as it gets colder there. और दूसरा आधा भाग सूर्य से दूर झुका हुआ है. यह भाग कमज़ोर है. सूर्य से दूर झुका होने के कारण गोलार्ध में रोशनी कम होती है. वहाँ सर्द का मौसम कहलाती है. मीन्स यहाँ ठंड पड़ती है. As the Earth revolves around the sun, the position of the two hemispheres change. Then there is a winter in the first hemisphere and summer in the other hand. सूर्य से चारों तरफ पृथ्वी सूर्य से चारों तरफ घूमती है और दोनों गोलार्ध में स्थिति बदल जाती है. Then there is winter in the first hemisphere and summer in the other. पहले गोलार्ध में सर्दी या दूसरे गोलार्ध में गर्मी होती है. From March to June, the northern hemisphere is tilted toward the sun and so the northern hemisphere has summer season. मार्च से जून तक उत्तरी गोलार्ध में सूर्य झुका होता है. During the March to June, the southern hemisphere tilted away from the sun has winter. From December to March, it's winter season in the northern hemisphere and summer season in the southern hemisphere. So, when the northern hemisphere has summer, the southern hemisphere has winter and vice versa. मार्च से जून तक उत्तरी गोलार्ध में सूर्य झुका होता है. इस कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है. मार्च से जून तक दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य से दूर झुका हुआ होता है. इस टाइम अपन को सर्दी होती है. दिसंबर टू मार्च तक गोलार्ध में सर्दी का मौसम होती है. दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है. जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है तो दूसरी दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी पड़ती है होती है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिया is in the northern hemisphere and Australia is in southern hemisphere. This means that when is summer in India and it is winter in Australia. हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है. इसका मतलब एक ही भारत में गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है. The equator gets direct sunlight throughout the year, so it is remained hot in the equatorial regions all around the year. Some African countries lie near the equator and hence have a hot climate throughout the year.
मतलब भूमध्य रेखा को साल भर धूप मिलती है, इसलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पूरे वर्ष को गर्मी रहता है। अफ्रीका देश में भूमध्य रेखा के पास स्थित है, इसलिए इधर पूरा वर्ष गर्मी का जलवायु होती है। In the beginning, in the earth was molten, means hot liquid ball. It took millions of years to cool down. Since it was molten, heavier substance like iron settled in the center. मतलब पृथ्वी एक पिघला हुआ एक बॉल है। ये ठंड होने के लिए लाखों वर्ष होती है। The less heavy substance settled from the middle layer of the lightest substance formed outer surface. This is why the earth has three distinct layers: an outer crust, middle mantle and inner core. पृथ्वी एक पिघला हुआ एक बॉल है। ये ठंड होने के लिए लाखों वर्ष होती थी। कम भारी पदार्थ मध्य परत का निर्माण करता था और एक हल्का पदार्थ बाहरी सतह का निर्माण करते थे। इस कारण से पृथ्वी की तीन परत होता है। क्रस्ट मीन्स बाहरी, मैंडल मीन्स मध्य और कोर आंतरिक। तीन लेयर के बारे में आज जांच करेंगे। Crust. The crust is hard outer layer of the earth's surface. It consists of light substance like basalt and granites. ये पृथ्वी को सतह की कठोर बाहर परत है। ये पृथ्वी का सतह की कठोर बाहरी परत है। इसमें कुछ हल्का पदार्थ है लाइक basalt and granites. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे mantle. The layer of below the crust is mantle. It consists of substance like silicates that are heavier than those present in the crust. इसका मैंडल क्रस्ट के नीचे परत है। इसमें सिलिकेट जैसे पदार्थ होता है। ये भारी होती है। कोर. The innermost layer is the core that consists of two parts. Inner part like solid iron, while outer layer is hot molten iron and nickel. ये आंतरिक परत है जिसमें दो भाग होता है, इनर पार्ट एंड आउटर पार्ट। इनर पार्ट में द इनर पार्ट लाइक ए सॉलिड आयरन एंड वाइल द आउटर लेयर इज हॉट आयरन निकल. The hot liquid rock that exists deep inside the underground pockets of the earth is called magma. When the temperature became too high and result in high pressure, the magma is pushed upwards through the cracks in the earth crust. पृथ्वी के एक भूमिगत भाग के अंदर गहराई में मौजूद गर्मी तरल चट्टान को मैग्मा कहता है। पृथ्वी के भूमिगत भाग के अंदर गहराई में मौजूद गर्मी तरल चट्टान को अपन मैग्मा कहलाती है, मैग्मा कहलाती है। इसमें तापमान अधिक होती है और हाई प्रेशर का परिणाम होती है। इस कारण से मैग्मा को पृथ्वी को पपड़ी का माध्यम से ऊपर ले जाती है। द मैग्मा दैट erupts from the cracks in the earth crust called lava. The volcano is mountain or hill having vent through which lava erupts. Volcanoes are destructive because they throw up very hot material, lava solidifies to form igneous rocks. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वोल्काना. वोल्काना मीन्स ज्वालामुखी कहता है। ज्वालामुखी एक पहाड़ी या पर्वत है जिसमें एक वेंट होता है। ये माध्यम से फूटता है, ये मध्यम से फूटता है। The erupts cracks in the earth crust called lava. एक volcano is mountain hill having vent through which lava erupts. ये मध्यम से फूटता है और ये सबसे विनाशकारी होती है क्योंकि ये बहुत गर्मी पदार्थ फेंकता है। The through which lava erupts volcano rusted because they throw up very hot material. ये विनाशकारी होती है क्योंकि ये बहुत गर्मी पदार्थ फेंकता है। The largest volcano on the earth is
Mauna Loa on the Hawaiian Islands, Japan and areas around the Pacific Rim are prone to volcanic eruption. सबसे बड़ा वोल्कानो है माउना लो एंड हवाइन आइलैंड्स। ये क्षेत्र में वोल्कानो विस्फोट होने का खतरा है। सबसे तेज बहुत खतरनाक है ये वोल्कानो। ये मतलब ज्वालामुखी बहुत खतरनाक है। Mauna Loa and Hawaiian Islands, Japan and around the Pacific Rim are prone to the volcanic eruptions. ये जापान का क्षेत्र में विस्फोट होने का खतरा है। ये बहुत डेंजरस ज्वालामुखी है, like Mauna Loa and Hawaiian Islands. Dear students, your last video has completed. Thank you.